South Asia, home to almost 2 billion people, a quarter of the world's population. The Indian government has imposed the biggest and most challenging lockdown. इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं. Millions have lost their jobs. Millions have no idea where their next meal is coming from. बीमारी से मरना मंजूर है, लेकिन भूख से मरना मंजूर नहीं है. दिन भर में कभी एक रोटी मिल जाती, कभी 2 रोटी मिल जाती, कभी थोड़ा सा चावल मिल जाता है. In some parts of the region, the coronavirus has fueled anti-Muslim sentiment. Islamophobia has driven the BJP from non-existence to power. It is continuing with that in the middle of one of India's biggest health crises. And it's put Bangladesh's main industry on the verge of collapse. এখন আমাদের বেতনের কোনো খবর নেই, আরো কয়দিন বন্ধ হবে আমরা সঠিক জানি না, আর আমরা কি খাবো না খাবো. From the slums of India to Pakistan's hospitals and Bangladesh's Rohingya refugee camps, the majority of people across South Asia simply cannot afford to be locked down. ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. It's been described as the largest migration of people since the 1947 partition. हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. The world's biggest lockdown came into force with less than 4 hours' notice and threw India into chaos. Hundreds of thousands of migrant workers rushed to leave cities before all air, bus and travel came to a halt. जो था वो खाया, अब आगे गुंजाइश है नहीं, कहाँ से खाएंगे, इसलिए जा रहे हैं घर. Daily wage earners suddenly out of work. अब हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, तो हम क्या कर सकते? Many walked hundreds of kilometers. कोमल में यही है, 21 तारीख को कंपनी बंद हो गई, वहाँ से मकान मालिक भगा रहा, बोल रहा कि मैं यहाँ न रुकने दूंगी, 3 महीना कंपनी बंद हो रही है, तो यहाँ कहाँ से किराया दोगे, कहाँ से क्या करोगे, यहाँ से भाग जाओ. The journey took days, for some even weeks. Many died along the way from starvation and accidents. Across the border in Pakistan, a similar story. हम गरीब बंदे, देखो हमारे से ये इतना कुछ तो नहीं कर सकते, कुछ तो क्या नहीं. देखो लोग मजदूर तक वो दिहाड़ी लगा के खाते हैं. जो लॉकडाउन है, घर में लोग हैं, तो जो उनका कारोबार होटल वगैरह बंद है, वो गरीब बंदे क्या कर सकेंगे. They work as street vendors, drivers or cleaners. There's no unemployment insurance, healthcare or other benefits. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact, in the developing world, our biggest worry now is people dying of hunger. In Bangladesh, the pandemic has snatched away what little security people had. করোনাভাইরাসের আগে আল্লাহ দিলে ইনকাম যা হইতো, ডাইল ভাত খেয়ে বাঁচতে পারতাম, আল্লাহ বাঁচাইতো. 700-800 টাকা ইনকাম হইতো. এই করোনা ভাইরাসের পরে যত নৌকা দুন আছে সব ভয়তে দেশে গেছে, তারপর আমরা কয়েকটা মাঝি এখানে আছি, বাসাবাড়ি আছে, আমরা কি খাবো এর জন্য. Across the region, efforts to combat COVID-19 face massive challenges. In India, millions of families live in single rooms. Many of them are in slums. The Dharavi slum in Mumbai is the worst hit by the coronavirus.
Social distancing is a luxury. Basic sanitation is a privilege. अभी तक हम लोग कोरोना से तो बचा हूँ, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि कभी की कुछ भी हो सकता है। किसी का कोरोना वाला आदमी बाथरूम में चला गया, वो नल जा करके एक आदमी हम लोग छुएंगे तो अभी हम लोग 9 आदमी है, तो 9 आदमी इसमें कुछ भी खतरे में पड़ सकता है। Doctors are expecting a huge spike in infections, but they're hampered by a weak healthcare system. We all know that Indian public health infrastructure is very poor. It has been poorly funded for decades. Doctors are being forced to work with this inadequate and substandard personal protective equipment elsewhere in the country, which predisposes them to higher risk of infection. So this is visible in the number of health workers testing positive for COVID-19 and the number of hospitals that have been shut down. India has a population of 1.3 billion, but only 50,000 ventilators, far fewer than the estimated 1 million needed. The government says the situation is under control. The preparedness is there for the government, and every day it is getting increased because we are converting hotels to hospitals. Then we are converting coaches. Every day new coaches are being converted to hospitals. And then in rural area we are preparing tent which can host 2 patients. But the pandemic has put other patients at risk. If we see even the non-COVID serious patients who are getting neglected, and this also coming as a major challenge to our healthcare system. Like if a patient who needs a dialysis, who needs a chemotherapy, or other patients who are serious patients but they were denied admission because now whole of the system is tackling only COVID patients. In Pakistan, health workers are risking their lives trying to save others. Some doctors have protested against a shortage of gloves, face masks and scrubs. Please raise your voices, okay, and so that we could pressurize the government to provide us with the basic personal equipments so that we could tackle the COVID-19 effectively. The pandemic has also exacerbated anti-Muslim sentiment in the region, especially in India. Thousands of members of an Islamic movement known as Tablighi Jamaat held a gathering in Delhi in mid-March, where hundreds of attendees later tested positive for COVID-19. Authorities started to blame the group for spreading the virus. ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने यहाँ से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग-अलग हिस्सों में चले गए। कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है। आज कोरोना के संकट से पूरा विश्व A disinformation campaign even accused them of creating the virus. 65% मरकज जमात के Some Muslims have been attacked and a number of hospitals have refused to treat them. The BJP is looking to make political windfall and shift attention from its own failings on infrastructure, on migration, and its leaders are very much party to the Islamophobia that is trying to keep attention away from the government's own failures. South Asia is expected to suffer its greatest economic decline on record. An estimated 120 million people have been laid off, and 400 million may sink below the poverty line. Pakistan and Bangladesh believe the global crisis requires a global response. I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. Bangladesh's textile industry could be decimated. Factory owners fear they may have to close down permanently. তো আমাদের যে সরকার ফ্যাসিলিটি আছে তার 3 মাসের বেতন ভাতা আমরা পরিশোধ করতে পারবো। 3 মাস পরে বাকি 3 মাস বসেই থাকা লাগবে। তো একটা ফ্যাক্টরি যদি এক মাসও বসে থাকে কাজ না সেই ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরি সার্ভাইভ করতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে 3 মাসটা লং টাইম। And millions have lost their jobs. মাস ধরে বেতন পাইতাছি না। এই অবস্থা আমগো ঘরে চাল নাই, খাবার নাই, আমরা কি খাবো? এজন্য আমরা আজকে রাস্তায় নামছি।
আমাদের কারো খাওয়ানো নাই, অনেকেই না খেয়ে রয়েছে। আমরা কারো কাছে যে হাত পাইতে ওই ঠুঙ্গা ধরে আনতে পারবো না, কেননা আমরা গার্মেন্টসে চাকরি করি, মাস শেষ গেলে বেতন পাবো ওই আশায়। আমরা যদি ধরতে যাই তাহলে আমাদের কি বলবে জানেন, তোমরা বেতন পাও না, গার্মেন্টস চাকরি করো না, তোমরা কেন ধরবা? কিন্তু আমরা ওটা ধরতে পারি না, তাহলে আমরা কি করে না খাই মরুম? The sector makes up more than 80% of Bangladesh's exports. Prime Minister Sheikh Hasina has promised a $500 million rescue package, but it may already be too late. As workers worry about their livelihoods, another group of people is even more vulnerable. Bangladesh is home to more than 1 million Rohingya refugees, living in wretched conditions in the world's largest refugee camp. The narrow paths and overcrowded plastic tents of Cox's Bazar are fertile ground for diseases to spread. Masks are rarely seen and hand sanitizer is unheard of. And humanitarian organisations are getting ready. When we look at the examples of other countries and the rate of spread, what we can say almost definitely is that the rate will be faster in the camps, and that we do expect to see a potentially more damaging spike because of the lack of access to healthcare and healthcare facilities. We don't know yet, but we are preparing for very fast transmission and preparing our healthcare facilities to deal with a huge number of patients. To prevent this, Bangladeshi authorities have restricted most activities. ওইখানে যাতে জনসমাগম না হয় এই জাতীয় জায়গা, যেমন লার্নিং সেন্টার, যেটা আমাদের স্কুল মাদ্রাসা টেম্পোরারি লার্নিং সেন্টার, যে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস, উইমেন ফ্রেন্ডলি স্পেস বা অন্যান্য যে কমিউনিটি, এগুলি সব বন্ধ করা হয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের অন্যান্য জনসমাগম যেখানে হয় সেটা করার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন, এটা যেটা এসেনশিয়াল কমোডিটিস না হলে অন্যান্য বিতরণ বন্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সে অনুযায়ী কাজ চলছে। Despite these efforts, the virus remains a growing threat for the Rohingya. Shutdowns have deepened social divides worldwide. And while the health crisis is still unfolding in South Asia, the attempts to keep it at bay are exposing millions to the risk of a hunger pandemic.